Yes, students, let's continue with the topic. So yesterday I told you, I asked you to find difference between over and above, under and below. So who will come and tell me? कहाँ से भी आपने फाइंड किया? Yes, बेटे. Yes, Shreya. Why are you standing, बच्चे? The pencil is under the table, and below window is below the painting. We cannot say the painting is under the sorry, the painting is under the window. Okay, anyone else? Anyone else, बेटे? हाँ हाँ जी बताओ, कोई बात नहीं. Yes, tell me. We use under to say that one thing is at a lower level than another, and then we use below to say that one thing is at much lower level. Can you come and tell me? Can you come here and tell? An example? यही जो भी आपने डेफिनेशन बताई है. Examples भी. We use under to say that one thing is at a lower level than another, and we use below word to say that one thing is at much lower level. तो ये कह रहे हैं कि under is at lower level and below is much more level. So there is no proper measurement कि कौन सा much more below level है या कौन सा below level. Otherwise, I have also found this. Under is used. Under is also used when the thing under something is covered by it. Like the book is under the table. So table book को cover कर रहा है. But below में ये जरूरी नहीं है. Like the painting is below the window. या window is below the painting. So ये जरूरी नहीं है कि the जो ऊपर चीज है वो उसको cover कर रही हो. That is not, I mean, sure. That is not fixed. So that is the basic difference between both the things. Otherwise, sometimes they can be used interchangeably. Now, what is the difference between above and over? Aaron, did you find this difference? Yes, Shreya? Above indicates the higher level than something, and over indicates the other side or covering an area entirely. For example, the girl slammed over the wall. Another example, the pencil is kept above the box on the table. The pencil is kept Above on the table. above on the table. If the pencil is kept above the box on the table. चलो anyways, तो बेटे इसमें यही है कि इसमें भी वही है. Above is considered for much higher level and over is considered for a bit lower level. उससे कम है तो ये भी above ही है, but इससे कम level पे हो. Then we consider over. And over is also used with the verbs. Like I jumped over the wall. Over हम उस केस में यूज करते हैं जब हमें इधर से कूदकर उधर पहुंचना है. Like the cat jumped over the ball. So there we use over. So that these are the basic differences between over and above and below and under. Now open your grammar books. Chapter preposition. Page number 83. Now, the correct use of some prepositions. So this is really important to know about the usage of some prepositions. Otherwise, we people use it wrong.
So the first point is with reference to time, at is used for point of time, in for a period of time in which something happens. जो first point है बेटे और जो second point है, we have discussed it in detail yesterday. कल हमने at, in, on को ही discuss किया ना, with reference to time, with reference to place and with reference to direction. So that is why we need not to do it again. We'll come to by and with at point number 173. हाँ जी, यहाँ भी बच्चे they commit mistake, heavy mistake here. What is the mistake? By means Ma'am, by tells us that who is the doer of that. by means द्वारा, and with means साथ. तो sometimes students say the letter was written by a pen. The letter was written by a pen. पेन के द्वारा लेटर लिखा गया. Do you think it is a right expression? No. So क्या आना चाहिए? With. So that means with is used for the tool और जो भी हम वो यूज कर रहे हैं, हाँ, इंस्ट्रूमेंट, एंड बाय पर्सन. बाय कहाँ यूज होता है? पर्सन. बाय मी, बाय यू, बाय हिम, बाय हर, बाय देम, बाय अस. बेटे यहाँ और बात हो रही है, यहाँ वो तो होगा ही होगा, यहाँ हम उस चीज की बात कर रहे हैं जहाँ कोई काम किया गया हो. Now what is the time by your watch? यहाँ no doer is not there. ठीक है? That is a simple question. अब मैं यहाँ by और with का difference बता रही हूँ. Just read the example. The farmer was killed by a robber with a knife. तो with मैंने use किया है tool, instrument या weapon के साथ. अब यहाँ जो knife है that is a weapon. So मैं with इसके साथ use करूँगी. अगर मैं कहूँ the farmer was killed by a knife, is it possible? नाइफ के द्वारा फार्मर को मारा गया. नो, वो अपने आप चल के नहीं जा सकता उसको मारने के लिए. डूअर इज समवन एल्स. हाँ, उसकी हेल्प के साथ मारते हैं. यू कैन ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इनटू हिंदी आल्सो. फार्मर को रॉबर के द्वारा नाइफ के साथ मारा गया. बैठो. The essay was written by me with a fountain pen. The tree was cut by the man with an axe. Difference clear हुआ? This is a common mistake committed by the students. Now on and upon. On is used for the objects which are at rest and upon is used for the objects which are at motion. ठीक है, अभी इन्होंने एग्जाम्पल हमें क्या दिया? वी सैट ऑन द ग्राउंड. कैन यू थिंक ग्राउंड हिल सकती है? इट कैन शेक या इट कैन मूव? नो. सो सिंपली ऑन. द कैट sprang upon the table. So table is in moving position. It can be moved. So the cat sprang upon the table. Now in and into. Can anyone tell me the difference between in and into? पहले भी किसी अंदर पड़ा हुआ और into motion में अंदर जा. पहले से पड़ा हुआ या नहीं पड़ा, but that thing is in rest. In implies a state of rest or position inside anything. But whereas into, अभी this is the water bottle. अभी ये water bottle है. If I try to put a chalk, would I use in or into? Into. I put a chalk into it. In it नहीं, क्योंकि अभी chalk जो है वो जा रहा है, that is in motion and that goes to something deeper, to interior of something. उसके लिए हम यूज करते हैं into. Clear? For interior of something and that is in motion. So whenever we say we jumped
into the river. We jumped into the pool. We dived into the pool. He is in his room. वो अपने रूम में है, in rest position. He is in the class. Like you people are sitting in the class. But he fell into the river. He jumped into the river. So the same motion is there. Now in and within. हाँ जी. He went into the room. ऐसा है अगर व्यक्ति वो जा रहा है and he is in the room. He is going to his room बेटे. He is going to his room. वहां into की जरूरत नहीं है. वो हम ज्यादा डीपर वाले सरफेसेस के लिए यूज करते हैं. And the teacher walked into the Yes, that walked के साथ फिर into आएगा. यहाँ into आएगा. To he went to his class. बेटे वो डिपेंड करता है ना कि सिचुएशन क्या है, सेंटेंस क्या है. हम preposition ऐसी चीज है जिसका हार्ड एंड फास्ट रूल है ही नहीं. These only we can learn the prepositions with practice. कुछ differences हैं जो clear हो सकते हैं, otherwise all the differences cannot be cleared. Now in and within. In means at the closure of something and within उस time period के अंदर. अब देखो यहाँ इनका मीनिंग फिर बदल गया. वहां इनका मीनिंग था किसी चीज के अंदर. नाउ द मीनिंग इन दिस केस इज किसी चीज के क्लोजर पे. मींस ही विल रिटर्न इन अ वीक. इन अ वीक मींस एट द क्लोज ऑफ दिस वीक. मींस इफ इट इज संडे टू सैटरडे तो वो सैटरडे को आएगा. बट इफ आई से ही विल रिटर्न विद इन अ वीक तो वो सैटरडे से पहले आ जाएगा. So we cannot imply every preposition into every situation with the same meaning. They change their meaning at different places. After and in. ये तो सबको पता होगा. She came after a week. After means बाद में. तो week के बाद में आया. And she will come in a week. Week के last day पे आया. Means at the closure of the week. अंदर अंदर फिर within आएगा. और basically they have told us कि after is used for past, कि she came after a week, and in is used for future. She will come in a week, कि वो एक हफ्ते में आ जाएगा. Now since and for we have done it many times in our tenses also. Since is used for point of time, for is used for period of time. Like if I say it has been raining since morning, it has been raining for 2 days. 2 days is a period, तो उसमें for आ जाएगा. Morning हमें एक point दिया गया है. Morning एक point है, एक चीज बता दी. वो कितने घंटे से है? Period has not been told to us. Clear? Now since and from. Basically the difference between since and from is since is used with perfect continuous tenses और since और का use कहीं नहीं है. Perfect continuous tenses, whereas from can be used with the any tense. Simple tenses के साथ भी use कर सकते हैं. देखें, they have given us examples. I have not met her since last week. Have ना, हाँ, since बेटे उसमें भी आ जाता है. Perfect tenses में और perfect continuous tenses में. Now I'll also tell you हम since किस condition में परफेक्ट टेंसेस में यूज करते हैं और किन कंडीशंस में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं. डू यू वांट टू नो? अभी बता दूं फिर मेरे दिमाग से निकल जाए. Can anyone tell me the difference between two sentences? We can use since and for with perfect tenses as well as perfect continuous tenses. Yes, Ramni. the first sentence it means कि वो
में वी आर नॉट श्योर कि वो अभी यहाँ है या नहीं है. इट कैन बी यूज फॉर बोथ द थिंग्स, कि वो यहाँ 4 साल से रहा है या रह रहा है. both things can be there, but in this case this is continuous. ये श्योर है कि वो अभी भी वहीं पे रह रहा है. ठीक है, ये याद रखना है सबने. समटाइम्स स्टूडेंट्स आस्क मी, मैम की परफेक्ट कंटिन्यूस के अलावा ये परफेक्ट में कैसे यूज हो गया. ठीक है, तो वो हमें याद रखना है. नाउ नेक्स्ट इज between and among. Between and among. Between for two persons, among for more than two persons. Among, distribute the candies between Arav and Pravjot. Distribute the candies among all the students. Clear? Now beside and besides, एक सिर्फ s का डिफरेंस है, बट मीनिंग्स टोटली ऑपोजिट. एक दूसरे से मेल भी नहीं खाते, इतने डिफरेंट मीनिंग्स है. हाँ जी, साइड मतलब किसी चीज की साइड साइड पे, बी साइड, इसको याद रखना है. बी साइड, किसी की साइड पे. एंड साइड्स मींस उस चीज के अलावा, उसकी एडिशन में, नॉट अलावा. वो भी और उसकी एडिशन में और भी चीज. Besides Sita, Meeta and Rita also joined the picnic. Besides Sita, Meeta and Rita also joined the picnic. कि उसके साथ साथ मीता और रीता ने भी पिकनिक ज्वाइन की. यस, हाँ जी बोलो बेटे. Besides the teacher, टीचर के साथ साथ हर कोई टायर्ड था. His answer is beside the point. She sat beside me. Besides being fined, he was also imprisoned. Fine के साथ साथ उसको सजा भी. Am I clear? So, beta, do you remember in 5th class we have done so many prepositions जो fixed होती हैं. जो fixed होती हैं. Have we done? हाँ जी, अग्री है एक preposition. One is agree with, agree to, agree on. Remember? Do you remember the usages of these with, to and on? कौन किसको honestly बताओ जिसको याद है. बताए तो बेटे मैंने आपको 6th में भी थे. If you remember, please tell me. Yes, रमनी बोलो बेटे. agree with person, हाँ, agree with person, right? agree to proposal, Agree to proposal, right? and agree on point. Yes, agree on point. ये सारे चीज से ही है. Person, proposal, point. So agree with person. He agreed with me. He agreed to my proposal. He agreed on my point. Clear? हाँ जी, ऑफ एक preposition होती है. ऑफ किस किस के साथ यूज कर सकते हैं? Fond of, proud of, afraid of, tired of. क्या tired of? एग्जाम्पल देना जरा. Yes, right. Tired of भी आ गया, चलो ठीक है. Died of, born of, scared of, fell off वो डबल एफ होता है. Fed off, fed up of. हाँ?
ठीक है, तो इन सबके साथ देयर इज फिक्स preposition that is of. I am fond of singing. I am proud of my parents. I am afraid of a lion. I am tired of doing this work. He died of malaria. Sita was born of rich parents. I am scared of a ghost. I am fed up of doing this work. Of वाली हो गई. Now he is addicted. Addicted के साथ क्या आता है? To. He is addicted to smoking. Prefer. Prefer के साथ बच्चे use wrong preposition. मतलब कि than तो वैसे भी preposition नहीं है. क्या है ये? इधर एग्जांपल दिया है प्रेजेंट दिया कंपैरेटिव डिग्री नहीं है ये, डिग्रीज और होती हैं. व्हाट इज देन? हाँ, कंपेयर तो करते हैं, पर ये है क्या? इज इट अ preposition? बेटे, it is a preposition as well as a conjunction also. Depends on its usage. But here, prefer के साथ we cannot use this preposition. Prefer के साथ we always use to. I prefer walking to riding. मुझे चलना ज्यादा पसंद है बजाय कि मैं राइड करके जाऊं. Then he is very good at English. Good के साथ we always use at. He is very good at English. Don't laugh at me. She was born of rich parents. She is proud of his wealth. He is ignorant of the facts. So ignorant भी आ गया एक और word. What is the meaning of ignorant? हाँ जी, पर यहाँ अटेंशन ना देने वाला मीनिंग नहीं है. ही इज इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट्स. उसको पता नहीं. ही डज नॉट नो अबाउट द फैक्ट्स. मीन्स वो इग्नोर्ड इन चीजों से. हाँ जी, एक और आती है एंग्री, annoyed, with, at. ये भी सेम है, सेम मीनिंग. If I say with, he is angry with me. He is angry at my mistake. इसको जरा ट्रांसलेट करो हिंदी में. जस्ट ट्रांसलेट दिस इट इनटू हिंदी. What is the meaning of with? And what is the meaning of at? तो इसको जरा ट्रांसलेट करिए. वो मेरे साथ गुस्सा है. वो मेरी मिस्टेक पर गुस्सा है. If you say he is angry with my mistake, वो मेरी मिस्टेक के साथ गुस्सा है. मिस्टेक के साथ कैसे कोई गुस्सा हो सकता है? मिस्टेक इज नॉट अ लिविंग थिंग कि जो जीता जागता आपके सामने खड़ा और आप उसके साथ गुस्सा होने लग जाओ. है कोई हमारे पास मिस्टेक नाम का प्राणी? नहीं है ना. तो मिस्टेक पर गुस्सा. क्लियर? हाँ जी, एक और है पार्टेड. पार्ट या पार्टेड. एक इसमें आता है with और एक इसमें आता है from. From means से. With means के साथ. He parted with all his money. कि वो अपनी पूरी मनी के साथ अलग हो गया. Parted means जुदा होना, अलग होना, सेपरेट हो जाना. वो अपने पेरेंट्स से अलग हो गया. He parted from his parents. वो देखा है आपने, कई बच्चे अपने पेरेंट्स से फिर अलग हो जाते हैं. They live separately, है ना. तो वहां आ जाएगा from
जब पूरा पैसा लेके हम अपनी प्रॉपर्टी लेके अलग हो जाते हैं, वहां आ जाएगा will. Clear? He parted with all his property, all his money. He parted from his parents. He parted from his brother. ऐसे. Clear? So parted का ये use आपने बेटे, you need to remember it. He is not afraid of death. We were astonished at her rudeness. हाँ जी, एक listen. Listen के साथ we use a preposition. What is it? To. But I have heard many students, they don't use to with listen. Whenever they speak, they don't use to. I listened to radio. I am listening to music. What is your hobby? Listening to music. Those who say listening music, that is wrong. Are you listening to me? I am listening to you. तो to इसके साथ आता है. Am I clear? पर्सन तो फ्रॉम के साथ है. पर्सन से अलग होना है. पर्सन के साथ अलग नहीं होना. उसको लेके तो अलग नहीं हो सकता ना, तो फिर अलग ही क्यों होता अगर उसको भी साथ ले जाता तो. तो पेरेंट्स भी ऑब्जेक्ट ही है. ठीक है. मनी प्रॉपर्टी के लिए फ्रॉम, विद, और पेरेंट्स या कोई भी रिलेशन हो तो उसके लिए फ्रॉम. Yes, he parted with all his money from his parents. Is this topic clear to everyone? Sure. So you got the homework exercise. कौन सी मिली थी कल? हाँ जी, 67 और 68 के 15 sentences थे. So today most probably we'll give you exercise 66 to do on notebook, and then 69 or 70 के 15 sentences on grammar book itself.